Lucknow is a historic city of art and culture, famous for its monuments, its cuisine, and its handicraft, especially Zardozi and chicken curry. Both of these are stylish and delicate embroideries. Zardozi is traditionally done with gold and silver threads, while chicken curry is a form of white floral embroidery done with needle and raw thread. Believed to have been introduced by the Mughal Emperor Jahangir's wife Noor Jahan in the 17th century. The Viceroy of India, Lady Curzon, and the British theatre and cinema star Dame Judi Dench have promoted this exquisite Indian embroidery throughout the world in mainstream Western fashion. Chikan is actually derived from the Turkish word chikh, meaning perforation. Because jali is one of the main important stitch in chicken curry, we say that there are about 36 stitches in chicken curry, but the basic 5 are there and the rest are the derivations. So chikh was difficult to pronounce, which means perforation for the air and light to pass. So as it was mispronounced, so it was chick, and from chick it became chicken, and the workman is known as chikankar, and the final product is chicken. Love these hands, stitching flowers, white and white chicken. Honor their threadwork and textile embroidery. These are the people who dream to beautify others' garments with their chicken work. They welcome the world with smiling lips and wet eyes, because their cup of tea is rather embittered. The family condition is so bad, economic condition was very poor, it was very difficult to manage day-to-day affair, either food or clothing, housing, water, sanitation. चार 500 मकान है यहाँ पे, मलिन बस्ती है यहाँ पे, और सब गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, लाइन के किनारा है। और ये चिकन का काम हम लोग करते हैं, हम लोग के आदमी रिक्शा चलाते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। Even in the midst of a wasteland of indifference, the chicken artisans are forced to live with the erratic ups and downs in life. They breathe but feel that the air is not their own. A golden sadness can be seen behind the back of their laughter. Chicken curry is global, but in Lucknow and on the outskirts of Lucknow, all chicken workers, or at least most of them, have to pass through narrow streets and bylanes of life, where they are also deprived of fresh air and clean drinking water. पर इस समय इनके जैसे ऐशबाग हैं, बक्कल मिल हैं, गरी कनौरा हैं, मवैया हैं, इसमें इन लोगों को शौचालय और पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। पानी नहीं आता है, सुबह है तो शाम नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। ये है कि रात में हम जाते हैं, माँ बेटी भर लाते हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर दूरी पे हम लोग शाम को निकलते हैं पानी भर। बाकी जो पर्दे में नहीं रहती हूँ, दिन में जाके अपना पानी नहीं भर के चली जाती हैं। उसके बाद जो टाइम निकलता है हम लोग चिकन का काम बनाने लगते हैं।
भारत के गांव में आज भी बहुत सी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है, जिनमें पानी सबसे अहम है। और हमारे गांव की जहां तक बात है तो यहाँ पे नल तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बहुत सारे नल ऐसे हैं जो खराब पड़े हुए हैं और कोई भी जिम्मेदार उनको बनवाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। पानी की स्टार्टिंग यहाँ पर बहुत कमी है। जाने आने वाले भरने की बच्चों को उठावा जाता है, सुबह टाइम में कहाँ लमा जाए पानी। यहाँ हैंडपंप थे वो भी सब बिगड़े पड़े हैं। बच्चों को जबरदस्ती कहा जा रहा है बच्चा पानी भर लो, नहीं जा रहा है तो खुद जा रहे हैं। बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, लेने जाते वहाँ खेल पड़ गए और यहाँ जो काम हो रहा है वो भी रुका है। हमारे गांव में समस्याएं पानी की सबसे बड़ी है। हैंडपम्प में जो सरिया लड़ के आती है लोहे से लोहे में, उससे पीला पानी हो जाता है। वो पानी पीने से हमारे गांव में बीमारियां ज़्यादा बनती हैं। हमारा एक बच्चा पानी पीने से ही विकलांग हो गया है और 20 साल का हो गया है। वो दर्जोजी का काम कर लेता है, लेकिन अचानक एक दिन अभी जूता जो बना वो उससे गिर गया तो उसका एकदम पैर समझ लो जांग पर से ही डैमेज हो गया, टूट गया। बल्कि अब वो काम जो करता था लमसम हो गया है 5-6 महीने, तब से वो कर ही नहीं पाता है। अब वो बेचारा एक एक कौड़ी एक एक पैसे का मोहताज है। एक दिन तो हमसे कह रहा मेरा बच्चा कि मैं ट्रेन के नीचे जा रहा हूँ, हम नहीं यहाँ पे अब रुकेंगे। You see, the biggest problem in the old Lucknow, especially the old lines, that the water line and the sewer line, they goes together. पानी सीवर का आता है और कितने बार शिकायत करी गई लेकिन कुछ वो नहीं हुआ, हल नहीं हुआ है। So lot of outburst of the cholera, many other illness, the hepatitis and things like they come out very often in those areas. पानी अगर मिलता भी है तो वो भी गंदा मिलता है और जगह जगह पाइपलाइन फटी हुई है, पानी यूजलेस हो रहा है। पानी की कमी से ही बीमारियां भी हो रही हैं और इन्फेक्शन भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। हड्डियों में भी इन्फेक्शन पैदा हो गया है। यही समस्या हमारे बच्चे की भी हुई है तो हम इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब इतनी गंभीर समस्या हो गई है पीठ में कि हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत पैसा डॉक्टर कह रहे हैं, हम कहाँ से कराएं इतना। यहाँ पानी की समस्या इतनी है कि बच्चे के लंबाई में मतलब समस्या हो रही है। हर बच्चे को इतनी दिक्कत है, जोड़ों में हड्डियों में। नल में गंदा पानी आता है, मतलब लाल पानी सब, मतलब पीला का, मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा पानी आता है। इससे हम लोगों के वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं। वो दूषित जल जो होता है उसको पीने से हमारे यहाँ खुजली होने लगती है शरीर में, बच्चों के या फिर सभी के, और दस्त हो जाता है, मतलब पेचिस से सब सारी बीमारियाँ हम लोगों के दूषित जल से होती हैं। और पेट दर्द, खुजली होने लगती है शरीर में बहुत ज़्यादा सी, मतलब और दाने पड़ने लगते हैं। मेरे यहाँ पानी की लाइन फटी हुई है, अगर अंदर आता भी है तो उसमें गंदा पानी आता है। कभी कीड़े आते हैं, कभी बहुत गंदा पानी आता है। All of them decorate scarves, saris, kurtas, etc. with white, golden and other multicolored threads for the chicken fans. They dream all time for a golden life behind white threads with sad fingers in their empty pockets. Thread workers create beauty but get nothing in return. Socioeconomic condition was very bad. The wages were not very high. Women were not allowed to go out of the area to work. So middlemen used to come and used to make money, and they used to give work at home in a very, very
nominal price. So the condition was so bad. In many of the households, they used to have meal once a day. हमारी जब से शादी हुई करके आए तो यहाँ सब कच्चा एकदम बना था और वो सब सन 81 में गिर गया। उसके बाद में मैदान में प्लास्टिक डाल दिया है। उसके बाद में वही मट्टी उठा करके इन ईंटों की बनाया हमने। और उसके बाद में पहले चिकन का चलता था, फिर कोटियाँ सहनी की चलती थी, वो बनाया। अब उसके बाद में साड़ियाँ थी दरदोजी की, दे देते थे उसमें जैसे ये चिपकाना है इसी तरीके से उसमें चिपकाते थे। अब वो भी नहीं रहा तो ये 40 रुपए का ये दुपट्टा बनाते हैं। सुबह से शाम तक के सुबह से सुबह का लगा हुआ है ये, और भी नहीं बन पाया है। काम वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई जल्दी तैयार करो हमको दो। तो अब हम अस्पताल से आए हैं, हमको हार्ट की भी परेशानी है और ये सब चीज़ें। 5 लोगों का खर्चा है, 3 ये लड़कियां हैं, ये नाती हैं और इसका आदमी तलाक लेके चला गया। जो महिलाएं हमारी चिकन का काम इस समय भी कर रही हैं, हमारी महिलाएं काम, उनमें से भी ऐसा होता है कि उनको कम प्रॉफिट मिलता है। जो मैं 130 की लाई वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो वो औरतें उसमें बनाने में असमर्थ हैं। 4 औरतों ने बनाया, 2 औरतें उसमें बीमार पड़ गईं। मेरा काम भी रुक जाता है, मेरा अपना नुकसान होता है। मेरा अपना नुकसान तो जो होता है, लेकिन हमारी कारीगरों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। घर पे काम भी करते हैं अपना, और काम करके जो भी हमें समय मिलता है हम कढ़ाई का काम करते हैं और बहुत काम करते हैं। सुबह से बैठ जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, फिर भी पैसा हमें नहीं मिलता है। मैं कहीं से ऑर्डर लेके आई और मैंने आपको पास ऑन कर दिया, आपने इनको कर दिया, है ना। वो आगे बढ़ता जाता है और जितना वो आगे बढ़ता जाता है उतना उसकी मजदूरी कम होती जाती है। तो हम आप वो तक तो पैसे बन गए, बट उसके बाद जब तक इनके पास आया तो बहुत कम पैसा मिलता है। Bad living and working conditions contribute towards an extremely toxic and unhygienic atmosphere for the Lucknow chicken workers, and this, their fate, mocks the high-tech world. किस तरह से गंदगी पांव पसार रही है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और एक बार नहीं 10 बार यहाँ बीमारियाँ आती हैं और चली जाती हैं, उसमें मौतें भी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। गंदगी भी बहुत है महल्ले में, बच्चे इससे बहुत बीमार भी रहते हैं और चाहे इतना नहीं रहा गंदे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी भी बहुत है, ना रोड है कायदे की ना कुछ है। इस वजह से बहुत गंदगी है और बच्चों जितने बार नहीं रहा गंदे बन जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ये व्यवस्था नहीं हुई कि कूड़े का एक सही स्थान सुनिश्चित किया जाए, और कूड़ा इधर उधर डाला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो बाशिंदा है वो भी परेशान रहता है कि कूड़ा कहाँ फेंके, और कहीं भी जगह पाके वो किनारे डाल देते हैं। उसके बाद में कभी हवाएं चलती हैं और पानी बारिश होती है तो कूड़ा सड़ता है, उससे बीमारियाँ होती हैं और उड़ उड़ के वापस घरों में आता है। Even today, they are compelled to come out and queue up in an open public space and face the humiliation which they must for the lack of basic utilities and facilities in their own households. And that is nothing if not tragic. एक के घर में 3-4 परिवार है तो उनके घर में सिर्फ एक टॉयलेट बना है, तो उनके घर में लाइन लग के जाता है। शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, करीब आधा घंटा का टाइम लगता है। हमारे घर में तो लैट्रिन नहीं है, हम लोग तो जाते हैं करीबन 1 घंटे से करीब ऊपर ही और लग जाता आते जाते में। और शौचालय की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ पर बन गए हैं शौचालय, बट यहाँ पर टैंक नहीं बन पड़े। शौचालय वहाँ जाते, बम पुलिस में जाते, यहाँ मेरे घर में शौचालय नहीं है। बम पुलिस जाते तो वहाँ बहुत भीड़ भी लगी होती, कभी नहीं भीड़ रहेगी, कोई 1 घंटा लग जाता, कभी आधा घंटा लग जाता वहाँ लैट्रिन कर जाने में, और सुबह जाते 4 बजे। Working on wash investment in a specific context of artisans in Lucknow. Similarly, we have been working with other agencies, organizations in Kanpur and Unnao under the supply chain of
leather industries in Kanpur and Unnao. So these are the few business cases where we have been testing this business case for wash concept introduced by WaterAid globally. There have been growing evidences that an investment of $1 in sanitation brings the return for business to the tune of $5.5. Similarly, for every investment of $1 around safe water supply in business case returns around $2. So this is the premise that improving sanitary and water condition for workers. So the project overall will look into improving their wash condition of the workers at workplace as well as their habitations, so that their overall quality of life improves and leading to improved business opportunities and a greater productivity of life. Ultimately leading to the larger benefit to the industry, to the sector and the product itself. So that's how this concept looks into the workers or communities, not just mere as communities, but as workers who contributes to the sector or factory or overall GDP of country. Wipe their tears. Provide all of them with fresh, hygienic water and a clean atmosphere, and then see how they live and prosper.